The face-off over Jai Shri Ram chants in West Bengal has escalated, and that's because Home Minister Amit Shah launched a scathing attack on Mamata Banerjee, claiming that she feels insulted by Ram chants. Sharpening his attack on the West Bengal Chief Minister, Shah promised to the audience that even Mamata will start chanting Jai Shri Ram after the election. The crowd also vociferously chanted Jai Shri Ram with Shah through his rally. The Home Minister also said that if people won't chant the slogan in Bengal, will they then chant it in Pakistan? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। Home Minister Amit Shah launched a thunderous attack on the Mamata government over a host of issues, not just over Jai Shri Ram. Shah also reiterated his Sonar Bangla pitch and said that BJP will win over 200 seats in Bengal. Attacking Mamata over nepotism, he said that her government's priority is making her nephew Abhishek Banerjee the chief minister. Shah also said that Mamata is scared and now is running around to find a safe seat to contest in. He raised the issue of the Bengal government blocking several schemes of the centre for the poor and farmers and said that BJP's Parivartan Yatra will end unemployment in the state. Speaking on the issue of law and order in Bengal, Shah said that over 130 BJP workers were killed by TMC attackers, yet no action was taken by the Mamata government. मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये तो हमारे दिलीप घोष ने लड़ाई न ली होती तो वो घोषणा भी कर चुकी होती कि अगली बार भतीजा मुख्यमंत्री बनना। देश भर के किसानों को मोदी जी हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं, 6,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में। आप बताओ भाई, कोच राजवंशी समाज के लोग और सारे ट्राइबल समाज के लोग, सारे लोग बताओ जरा, आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, मोदी जी कहां से भेजे? अब आप बताओ भाई, आपने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, कुछ बिगाड़ा है ममता दी का? आपने बिगाड़ा है? मगर वो आपके 6,000 रुपया रोक कर बैठ गई। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। पहली ही कैबिनेट में जो आपका 12,000 रुपया चला गया उसके समेत अगले साल का 6,000 रुपया, 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। अभी ये रथ के अंदर परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। ममता दीदी को बड़ा भरोसा है कि जनता की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है। उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जिता देंगे ऐसा मानती है। मगर मैं कहने आया हूं ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपके दंगा प्रमुख गुंडों के सामने मेरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाला है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने वाला।
और ये लड़ाई आप नहीं जीत सकती, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम परिवर्तन करके ही रहेंगे। जिस प्रकार से ममता दीदी ने यहां शासन चलाया है और बंगाल को नीचे 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 ले गए हैं, इस बार ये परिवर्तन यात्रा तय करनी है। ये बार बांग्ला, ये बार 200 पार, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। Let me take this across now to Suryagni Roy, who's joining us live from Kolkata. Suryagni, this perhaps is one of the most aggressive speeches by Home Minister Amit Shah in Bengal. Multiple fronts that he's really attacked Mamta Banerjee on not just Jai Shri Ram, but also accusing her of corruption, of nepotism. Any response that's coming from the Trinamool Congress? Well, as of yet, there has been no official response of the Trinamool Congress. And mind you, the mere fact that Amit Shah, Home Minister Amit Shah, when he has arrived over here at Cooch Behar, and even, as of yet, the election dates haven't been announced as of yet. And in spite of that, Amit Shah is here. It speaks volumes of how aggressively BJP wants to campaign just before the 2021 elections. One very important aspect of his speech was when he touched the issue of farmers over here in West Bengal. What we need to understand is that Mamta Banerjee has time and again criticized and slammed the Narendra Modi government of not dealing the farmers' issue in a correct way. And today, Amit Shah from Cooch Behar, he stated, he lashed it out on Mamta Banerjee, and he, said that the money, the center scheme of Kisan Samman Nidhi, it's not benefiting the farmers of West Bengal because no documentation is being sent by the Mamta government. Now, why is this important? It's very important because yesterday itself, Mamta Banerjee had criticized the center's policies, and she also mentioned that we have sent, like the government of West Bengal has sent all the data of the farmers for this particular scheme. She doesn't mind if this is being implemented for the betterment of farmers. She has sent the data of all the farmers, but nothing has happened for the farmers as of yet. And in 24 hours, this is the BJP's counter to Mamta's stand. So it's to Mamta's allegation. This is the counter allegation of Amit Shah that we are sending that you have not sent us any documents or details or data through which we'll be helping our farmers. So at one hand, you have Mamta Banerjee who's stating that she has sent the details, the data of the farmers, but nothing has been done. And today, it is the Union Home Minister Amit Shah, slamming the Mamta Banerjee government and alleging that the government of West Bengal hasn't sent any data as of yet. Back to you. That's right. Suryagni, thank you for joining us with those details. I expect more such fireworks because in a few hours from now, Home Minister Amit Shah is also going to be at the India Today Conclave East speaking at 8 p.m. in Battleground Bengal. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.